It was the year 1958 when India got its iconic car in the Indian market, of course. And जब 1958 में गाड़ी लॉन्च हुई थी ना, उसके साथ साथ और तीन गाड़ियां भी लॉन्च हुई थी। दी पद्मिनी, जिसे सब लोग जानते हैं, दी मॉरिस मिनार जो एमजी की तरफ से आती है अभी, जैसे हम कहते हैं, एंड देयर वाज वन मोर कार जो उस टाइम लॉन्च हुई थी। एंड ऑल अमंग द थ्री कार्स ना, ये जो गाड़ी है ना, इट वाज लाइक द हाईलाइट। एंड फर्स्टली इट वाज यूज्ड बाय ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस, व्हाइट कलर में ही ज्यादा की गाड़ियां घूमती थी। सेकेंडली इट वाज यूज्ड बाय नेवी, इंडियन आर्मी भी इस गाड़ी को यूज करते थे, बिकॉज द कार हैड अमेजिंग स्टांस, लुक्स, परफॉर्मेंस, पावर, बिकॉज इट हैड अ डीजल इंजन। हाँ, उस टाइम पे डीजल इंजन आता था, 2 लीटर्स का आता था, 1.5 लीटर्स का आता था। एंड सेकेंड थिंग इज दैट इट वॉज फुल्ली मेड ऑफ मेटल। और अगर अभी के जमाने में 2025 में अगर आप उस गाड़ी को लेने को जाते हो, देन इट विल कॉस्ट यू मोर देन 20 lakhs। ये तो मैं मुंह पे कहता हूँ, बिकॉज पीपल यू जो मेंटेन करते हैं ना गाड़ी को, इट इज लाइक अमेजिंग जो कंडीशन होती है। और ज्यादा के लोग उसे बेचना चाहते नहीं है, एंड यू वोंट गेट दैट कार बिकॉज वो तो डिसकंटिन्यू हो गई है, दैट्स फॉर श्योर। एंड ये जो मैं भी कह रहा हूँ, इट्स ट्रू, ऑफ कोर्स, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आएगा दिन स्वागत है आपका वीडियो में, जहां पे मेरे साथ है द विंटेज आइकॉन, द हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर क्लासिक 2000 DSZ, एंड दिस इज फुल्ली मेड ऑफ मेटल। सब कुछ मेटल है, एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस एम्बेसडर इज स्टॉक, सब कुछ स्टॉक है। बेसिकली दिस कार वाज फर्स्टली ईयर इज 2004, जब इसका मैन्युफैक्चर हुआ है अप्रैल 2004। एंड दिस कार वाज फर्स्टली अ टैक्सी कार जो येलो नंबर प्लेट्स में आती है, बिकॉज इट वाज यूज्ड बाय अ रिसोर्ट, एंड देन द ओनर चेंज द आरसी रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, एंड नाउ इट्स अ प्राइवेट कार, ऑफ कोर्स। एंड द कलर वाज आल्सो काइंड ऑफ टैक्सी सॉर्ट ऑफ थिंग, बिकॉज मुंबई में ये गाड़ियां ज्यादा करके दिखती थी, बिकॉज टैक्सीज ना गोवा में भी दिखती थी। एंड नाउ द कलर हैज बीन चेंज, ऑल द पार्ट्स आर स्टॉक, प्रॉपर स्टॉक, एकदम ओईएम पार्ट्स है सभी, एक एक चीज को छू के महसूस करके सब कुछ कवर करने वाले हैं। ऑल्सो दिस हैज द टू, नॉट टू, 1.5 लीटर्स डीजल इंजन है यार। सो चलाने में कैसा है वो भी चेक करना है, 4 सिलेंडर वाला डीजल इंजन है, तो वो भी चेक करना है। टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द की एज यूजुअल, बिकॉज द की इज सो यूनिक एंड एज द कार, ऑफ कोर्स। कितनी लंबी चाबी है यार, जस्ट लुक एट द चाबी। So has some collaboration partners also with it. So this चाबी is for to start the engine, of course. This key, the second one which you're looking now, is to open the glove box, and the second one which is smaller sort of thing is to open the dicky। अगर एक भी चाबी गुम हो गई तो संकट हो सकती है। So let's keep this aside and let's come to this iconic vintage car from Hindustan Motors, which is discontinued right now. And let's come to the technical specs. Before that, this car comes from Prakash Lamani to me, which is my friend, and this car belongs to the owner, who is João Barros Pereira, and he owns a hotel, a vintage hotel, a heritage hotel, of course, in Goa, in Councilim, which is named as the Honeymooners Hostel. You can just check out his profile. I'm just pinning down the link in my description. You can just check out the profile also. Let's come to the technical specs of this Hindustan Motors Ambassador, and the length of this car happens to be 4.3 meters. The width is 1.6. The height is also 1.6. The wheelbase is 2.4 meters, and the ground clearance is the huge and biggest in the segment, is around 200 is the ground clearance, which is huge. And this car is a rear wheel drive, not a front wheel drive. So चलाने में कैसी है वो भी तो check करना है ना. Before that, let's open the engine hood, because there is some unique stuff. I need to press this lever. I just need to open it and it will get auto lock. Yeah, this is a cool stuff जो अभी की गाड़ियों में आता ही नहीं है. You get that gas struts, you get that hydraulic stuff. एक डंडा मिलता है जिसे आप मैनुअल लगाना पड़ता है. But this car has a unique bit. So this is the 1.5 liters diesel engine and carburetor engine, of course, 4 cylinder वाला. And there is a lot of oil because oil तो leakage होता है ना, because oil splashes over here too. No insulation as such, and some bits are there. So this is for the horn probably, and painting वगैरह हुई थी ना, because I was saying ना ये गाड़ी पहले टैक्सी थी, बाद में उसे पेंट कन्वर्ट किया है, रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कन्वर्ट किया है. And there are the cylinders, 4 cylinders के आपको दिख रहे हैं, and all that stuff, transmission वगैरह, kind of unique and complicated stuff, of course. A huge battery, so that you need to power a lot of electrical items now. And to close this now, I just need to roll it up, I need to roll it down, and I can do it with my one hand. And let's close with a bang. That's for what it is. Let's come to the front of this unique car, of course. So gets this amazing grill. So Hindustan Motors की identical grill है ये, because Hindustan Motors की ज़्यादा की गाड़ियों में आपको ऐसी ही grill मिलती है. There is a radiator, and so पानी कूलेंट दोनों मिक्स करके डालना पड़ता है, because that's the stuff. गाड़ी को इंजन को कूल रखना पड़ता है. All things are stock. The grill is stock. क्रोम वाली ग्रिल है. So this is so unique. अच्छी लग रही है, आगे से मस्त लग रही है गाड़ी. So this has the chrome bit on this two original Hindustan Motors का logo.
the chrome bumper which has some unique bits of course. This is all in metal. करके लोगों ने प्रिजर्व करने के चक्कर में ना बम्पर में कन्वर्जन किया है, दे हैव मेड इट इन प्लास्टिक फाइबर सॉर्ट ऑफ थिंग, बट दिस हैज ऑल इन मेटल, सब कुछ मेटल है. द क्रोम बम्पर, देयर आर सम रबर बुशिंग सो द गाड़ी आगे टकराए नहीं. दिस इज द नंबर एंड दिस इज अंडर द body of this iconic car. So this is for the sight and indicator which is in halogen, which is working right now. Halogen में headlights, high beam, low beam सब कुछ halogen में ही है, no LED stuff. So this is also the chrome bit, सब कुछ genuine, सब कुछ stock है. These are the wipers which are in black color. So this is the white color of course, classic white, something sort of that. I'm not able to tell that right now because मैं चीजें भूल रहा हूँ. This is the sight and indicator which is on the fender, neither on the mirrors. जब अभी हम mirrors में मिलते हैं ना अभी. So this is the sight and indicator which is placed on the fender of course. Has this amazing 15-inch tires which is not an alloy. This is a steel wala stuff and has this amazing wheel cap which is in Mercedes logo. So Hindustan Motors की गाड़ी पे Mercedes का logo and this is kind of then a पतरे का sort of steel sort of thing. This is the front suspension which is the MacPherson stunt with coil spring suspension का छोटा वाला version, independent torsion beam of course, which is independent, and the rear suspension happens to be a leaf suspension. And look out the amount of cutting at the edges here. Attention to detailing in this car is just amazing. So leaf suspension is right now there and you can see the transmission under the body. So exhaust वगैरह full आगे से पीछे जा रहा है. And yeah, these are the side looks. मेरे से भी छोटी है यार ये गाड़ी height में. These are the rear looks of this Ambassador. Has this cool curtsy looks of course. So a lot of chrome treatment, even though I am not a fan of chrome, but a lot of chrome treatment on this car. So chrome hinges of course. So chrome, a lot of chrome treatment. So bumper भी chrome में है. Rubber bushings at the rear. Also 2000 DSZ, the model name of this car. Ambassador Classic, Hindustan Motors का logo पीछे नहीं है. And this is a number plate. Number plate light is in halogen as usual. Exhaust भी थोड़ा बहुत changes किए गए हैं. It has been stroke outwards. And the spare tire यहाँ पे नहीं लगाया गया है, नीचे नहीं है, boot के अंदर है. The rear wheel drive transmission is kind of visible right over there. This has the racing inspired mud flaps. काफी अच्छे लग रहे हैं. Let's open the boot. I need to just turn it. Oh my god, and this also slots in. This also slots in here. So unique. And this is the biggest boot in the segment. Just look at the boot space here. 2-3 बंदे को आप किडनैप करके ले जा सकते हो. This is the amount of boot space. This is where the diesel goes. So यहाँ से आप डीजल भरवा सकते हो. A cool safety feature from Hindustan Motors. यहाँ पे आपको डिक्की ओपन करके ही पेट्रोल और डीजल भरवाना है obviously. So the same tire. I like the exterior tire of course. A lot of stuff because it's a iconic vintage car. So you have to keep a lot of stuff. So belt, battery, bushes वगैरह बहुत सारी चीजें रखनी पड़ती हैं. Let's close this afterwards because एक हाथ से नहीं कर पाऊंगा मैं. Let's open the second row because the door handles are kind of very much cool. And okay, the hinges are making sound right now. Just look at this stuff, okay? Full यहाँ तक open हो जाती है. 90-degree door opening angle यार in the 90s car. Oh my god, that's so unique. Let's sit inside the car now. So the interior is kind of this stuff. So बैठ जाते हैं. A lot of kind of cool stuff. So legroom is okay. Under thigh support is amazing. मैं first time बोल रहा हूँ एक vintage गाड़ी में under thigh support is just amazing. The recline is kind of okay. But मैं ऊपर ना I am like टकराने वाला हूँ. The headroom is not that much cool. But there are some stuff, some magnesium holders which has some security chain sort of thing. This is a transmission, so there is a hump sort of thing because transmission rear wheel drive. Now obviously मतलब hump होगा ही होगा. Seat belts and all that stuff. Yeah, the center passenger, neither the passengers have the adjustable headrest. That's a sad part of course. There is a lamp which is kind of off the duty. यहाँ पे grab handles है जो fold नहीं होते हैं. There is the AC because this car doesn't have any rear AC vents because इसीलिए यहाँ पे fans लगाए गए हैं. There is a fan over there for the driver and the passenger of course. This is the fan for the passengers for the rear of course. And no power windows. Yeah, ये rolling वाले windows है जो आपको बेस मॉडल गाड़ियों में अभी तक मिलते थे. टिल 2004 यूज्ड टू गेट इन ऑल द बेस मॉडल कार्स ऑफ कोर्स जो अभी पावर विंडो में कन्वर्ट किए गए हैं. बट दिस हैज सम यूनिक बिट्स. So yeah, this is the second row space and lot of close करने में ना बहुत ताकत लगानी पड़ती है. And let's check out the driver door. Before that, this is the handbrake जो यहाँ पे लगाया हुआ है truck style, truck inspired of course. And there are some oil coolants ये रखने ही पड़ते हैं because iconic vintage car ना you have to keep all this stuff for security of course. This is the non-power windows, so this is the lever to open your door. And the overviews are kind of चिंटू मिंटू जो मुझे लग रहे हैं इस काइंड ऑफ हाँ विंटेज गाड़ियों से ही इंस्पायर्ड होकर आए हैं. बट दे आर चेंज आई गेस. नो, दे आर स्टॉक ऑफ कोर्स. एंड ओके, द सीट इज काइंड ऑफ it is adjustable but it's kind of off the duty right now. This is the dashboard view and has a lot of soft touching, so ये काफी अच्छा है.
And I was saying ना, एक मिनट इसको पहले रख देते हैं. I was saying ना, you can open the glove box via this switch. इसको आपको डालना है, and you have to turn the switch, and you need to press this lever. So this is where the glove box open. All the documents are been placed. Lock कर लेते हैं. And this is the 5 speeds manual transmission, and A, B, and C. A, B, C. The accelerator is a floor mounted, not the horizontally mounted. What is ना अभी गाड़ियों में आपको मिलता है. This is the BMW में आपको जो मिलता है अभी के ज़माने में. That kind of accelerator pedal जो हम चलाते हैं वो बताएंगे. The steering is the original OEM steering. Horn is kind of, oh my god, it's retiring. Yeah, so horn is kind of retiring. The seats are amazing. पहले इसमें आपको band seats मिलते हैं because this was a taxi ना, so you should get a band seat. But इसमें conversion किया गया है. Individual seats has been installed, and all stuff is like amazing. Yeah. So this is the sunshade जो अभी retire होने के road पे है. There is a AC जिसपे आप यहाँ से on कर सकते हो, and the chilling is so amazing. यार, both the ACs get on एट द मोमेंट. सो एक साथ ही ऑन हो जाते हैं. लेट्स इंसर्ट दिस चाबी. इसके लिए भी सिक्योरिटी फीचर है. आपको चाबी ऐसे डालनी है. ओके, आई एम लाइक कंफ्यूज. तो इसका आपको चाबी डालनी है. यू नीड टू टर्न ऑन द एक्सेसरीज. सो ऑल द इलेक्ट्रिकल आइटम्स गेट टर्न ऑन. बैटरी, इंजन वार्निंग, फ्यूल गेज, टेम्परेचर, ये स्पीडोमीटर, टेकोमीटर नहीं है. एंड या देयर इज नो रेडियो, समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट. देयर इज नो वर्किंग एसी, इसीलिए ये फैंस लगाए गए हैं. एंड दिस आर फॉर द साइड टर्न इंडिकेटर्स. दिस इज प्रोबेबली आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज. ये हाई बीम के लिए होगा शायद. This is the headlight on off switch, and this is for something I'm not able to recognize. आगे की light on हो जाती है, I'm not able to recognize. This is the bonnet opening lever, some wires exposed over here, and गाड़ी को start कर लेते हैं. Then clutch is so hard यार, कितना hard clutch है. For that I need to be neutral, and let's start the car. Okay. Okay, here it rose to life. यार क्या ही आवाज है यार इस गाड़ी का. Diesel engine of course. This is for the hazard light for your information of course. The dashboard view is kind of okay, काफी अच्छा है. The fan is kind of colliding with me right now, and this 1.5 liter diesel engine is like monster to roar यार. But गाड़ी चलाने में कैसे, because this has the power steering. Yeah, power steering. But गाड़ी चलाने में कैसे वो भी चेक करना है ना on the go on road. So without wasting time, let's start driving this iconic vintage car from Hindustan Motors, the Ambassador, with the power steering, with the manual transmission, with the diesel is a diesel. Right away, चलो चलते हैं. Top speed check करेंगे आज, देखेंगे. Let's go. So let's start driving this iconic vintage car from Hindustan Motors, and clutch is kind of थोड़ा घट लग रहा है मेरे को. And when car turns on, it does a wobble like the Toyota engines of course. And मैं थोड़ा सीट थोड़ा आगे ले लेता हूँ because ड्राइविंग के लिए नहीं तो वाट लग जाएगी. एंड आई नीड टू लॉक दिस लीवर ऑफ कोर्स, एंड आई एम वेयरिंग द सीट बेल्ट्स इन दिस ओल्ड कार. क्लच दबाया इनटू द फर्स्ट गियर, एंड हैंड ब्रेक्स आर डाउन ऑब्वियसली. आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ एक्सीलरेटर, एंड ऑन द क्लच ओनली इट्स गोइंग. विल टर्न ऑन द फैन फॉर अ मोमेंट बिकॉज काफी गर्मी है. On the second gear, oh my god, driving this car is kind of a huge task, and people are like giving horns. And okay, third gear, and giving the accelerator. The rear fan is kind of colliding with my head right now. And let's come to the engine that this iconic vintage Ambassador gets. This gets the 1.5 liters diesel engine, which produces a power of 52 bhp of power and 160 newton meters of torque. 0 to 100 in like 11 or 15 seconds, because engine में कभी tuning नहीं किया गया है. Claimed mileage that the company claimed earlier was around 14 kilometers per liter, but अभी आपको काफी कम मिलेगी because this diesel engine drinks a lot of fuel यार. And okay, understeering is kind of, oh my god, because this is a power steering, and somehow driving this is a huge task for me right now because steering alignment is not proper first thing, and secondly this is a power steering ना. So इस गाड़ी में power steering चलाना is a new experience for me of course. Let's go, and we need to take a left right now because the side turn indicators are hopefully working. Clutch is kind of very much घट्ट है यार. Into the first gear, full brake लगाना पड़ेगा. Into the first gear, and एक गाड़ी आ रही है उसको जाने देते हैं because we have no hurry. Okay, I'm giving full accelerator. Second gear, okay, and clutch released. फिर भी clutch release नहीं हो रहा है. And let's go. Top speed I can't check because the speedometer is kind of off the duty right now. And on the third gear,
ड्राइविंग इज अमेजिंग यार, बट somehow the clutch is kind of ना मुझे थोड़ा गट लग रहा है। आई डोंट नो बिकॉज गाड़ी की थोड़ी उम्र हो गई है, बिकॉज दिस इज अ 2004 ईयर जो मेरे डेट ऑफ बर्थ से मिलती जुलती है। सो एक 21 years this cars have completed right now and is in immaculate condition यार। सो एकदम मस्त आइकॉनिक कंडीशन में है। ईच एंड एवरी पार्ट इज genuine, each and every part is OEM, each and every part is fresh. So the chrome beads, the chrome parts are also amazing. Driving this car is a huge experience for me because vintage car first time I'm driving। the ambassador of course जो डीजल वाली है and full throttle ओवरटेक कर लेते हैं। ओवरटेकिंग इज नॉट एन इशू बिकॉज यू हैव द पावर स्टीयरिंग ना, सो ओवरटेकिंग इज नॉट एन इशू एट ऑल। बॉडी रोल भी काफी फील होता नहीं है, बट पीपल आर लाइक ओवरटेक करने की कोशिश में है एंड आई कांट गिव द पास बाय स्विच बिकॉज आई एम लाइक गेटिंग कंफ्यूज विद इन द स्विचेस। सो ड्राइविंग इज अमेजिंग, द राइड इज द कंफर्ट इज अमेजिंग। तो आगे की गाड़ी फास्ट बाय क्यों दे रही है मुझे? एनीवेज, सो यस दिस इज द विंटेज हेरिटेज आइकॉनिक कार फ्रॉम द हिंदुस्तान मोटर्स व्हिच इज काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यूड, बट होनी चाहिए थी यार। बट ऐसे कहावत आ रहे हैं दैट दिस कार इज कमिंग इन इट्स न्यू लुक, बट मुझे नहीं लगता आ पाएगी, कोई ब्रांड बनाएगी या नहीं मुझे पता नहीं। बट दिस इज द आइकॉनिक कार यार। अगर आप अभी लेने जाते हो देन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 20 lakhs या 20-25 lakhs तो कॉस्ट करेगी ही करेगी यार। दिस इज द reach, this is the level of attention this car is having, not this car, all the cars, Padmini हो गई, then Morris Minor हो गई, the cars now have अलग attention in the Indian roads of course। Yes, this was the complete driving part and the walker of the iconic vintage heritage of India, none other than the Hindustan Motors Ambassador 2000। If you like this, do share and do subscribe and follow my Instagram and my WhatsApp channel for my daily updates। तो यार मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। यार गाड़ी चलाने में सही है यार, मजा आ रहा है।